and today's part is the background properties. Now, in this background properties, we have seen there are 8 properties to be understand by from our side, and into which we have already covered something a theoretical part as far as the background is concerned, and uh, background color image position. These 3 properties are from CSS1, whereas background size is from 3, background repeat is from 1, and this 2, that is background origin and clip. These are both are from your CSS3. And the last one, this is from CSS1. So overall, 8 properties we have to understand as far as the background is concerned. Okay. This example we have started, that is a background color we have given for your body tag, directly for your body, that we have checked that we can give a background color to your individual tag, that just like H1P or div tag can be given a background color. Third example, we have seen the opacity, that is transparency, by giving the opacity 0.1 to 1.0. It's a maximum range. So opacity can be given, and it can be, we can use RGBA format also for giving a color, where opacity don't require to write opacity a separate property. So we can give it by using the RGBA, that is red, green, blue, and alpha values for opacity and transparency. So that we have seen the opacity value starts from 0.0 to 1.0. So you can give an opacity, that is an alpha value for your RGBA. We have seen up till now, and we have entered into this background image. I think so. Yes. Yes, हम इमेज को एंटर किए थे. Yes, we will go for example. This was the example where we have used this URL, and we have taken the reference from this what we call as जो link थे हमारी, उसमें से हमने ये लिया था. So I'm pasting the link now. Now see here, when there is a source attribute, it is written like this. And when it's background attribute, that is you are using a URL as your parameter, in those situations, one thing you have to do is that you have to change the arrows, that is front end, like this. Okay, so now it is saved, and you can run it on your Chrome. So that was the only change was expected, and you will see. So see the text content with all color. Are you clear with this? Why we have used this one? In previous, whenever we are used source, it was backward slash was given as far as source is concerned. But when we move towards the URL, this URL, we have to provide a forward slash. अगर मैंने इसको backward बोल दिया तो it will never show. अभी मैं एक example के लिए आपको दिखाता हूँ. जैसे मैं अभी इसको पूरा change कर देता हूँ. So Control V, and now it is forward slash, and now I am running this. तो मैंने ऑलरेडी जो रन किया है उसको भी रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यूआरएल बैकग्राउंड में वो चेंज होता है, यानी वो इमेजेस गायब हो चुकी है ना. उसको मुझे करने के लिए व्हाट आई हैव टू इज दैट आई हैव टू चेंज दिस टू फॉरवर्ड स्लैश, तो वो इफेक्ट आ जाएगा. तो दैट्स इट, द थिंग आई हैव डन लाइक दिस, और मैंने ये इमेजेस आ गए. सो फ्लावर इज देयर, फ्लावर 1 इज देयर, लेट अस सी. ओके, फ्लावर 3 इज देयर. आई हैव ऑलरेडी स्टोर्ड इनटू दिस. So background images can be given. Now we'll move further for background image. I think everyone is clear with this background image, the URL part. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now background repeat. अभी क्या हो रहा है कि ये एग्जांपल में हमने देखा होगा कि ये बहुत बार ऐसा हो रहा है कि इमेज एक बार उसकी बेसिक साइज आ चुकी है, पर ये हर बार रिपीट हो रही है. In those situations, you can use this property called as background repeat. Now repeat means what? You want to repeat, you can say it repeat. You don't want to repeat, you don't say no repeat. Repeat on x-axis or repeat on y-axis. So we just copy this property, same property. I'm copying this property and I'm pasting over here. Now what I'll do is that I will just run. This is background repeat, and I will say no repeat. यानी एक ही बार वो आनी चाहिए. So no repeat will be helping. Now in this refreshing, only once it will be available. If you are saying no repeat, तो ये हमारे example में बताया कि this is no repeat. This is no repeat. And by default, अगर आपको by default it is repeat. By default it is repeat. Just I remove this no repeat and I just save it. और ये हम इसके output में देखते हैं. तो refreshing repeat. That's it. And no repeat, no hyphen,
save it. Value will be changing the whole content. Okay. And now this all properties we go for repeat X and repeat Y. So these two, repeat X and repeat Y, what is this? We'll go for that one. So repeat, I'm saying repeat, and it is hyphen Y or hyphen X. So I'm saying repeat hyphen Y. So Y axis will be set to this property, and I'm just refreshing on Y axis. So you will see left to right is always an X axis, and top to bottom is always an Y axis. So you'll see in a graph here it is always started from the bottom. So zero we call it as your degree centimeter. So bottom vertical line is your x-axis and top line is your y-axis. So we have pasted an image on a y-axis, so like this. And now I want to show it on x-axis, so you can say on x-axis. So that's it. Okay, so you can repeat these images on based on your axis, whatever, wherever you want to specify. Yes. Yes. Any doubts? Any doubts? X and Y, no problem. No, Whatever sir. doubts, no. Okay. So we have completed with these four values as far as the background repeat is concerned. Now background. Now this is most important. Now background position, top, right, top, and all those things. So I just copy this and I paste over here, and I just say यहाँ पर जो है there is no repeat. So no repeat. That's it. Okay. So we'll move toward this example and we'll say live file. So position right top. So whenever I want to set, so I'm saying right top. So automatically the image will be displayed at the right top. Okay. Then I'm changing the values. Right, left top. By default, it is left top. Okay. So I'm refreshing it left top. Then left or bottom. Let us see. Left bottom. Right. That's it. So you can set an image. The position will be helping us to move the image from left position to the right position. So background position, we can set it to right top or right left, and anything, whatever you are specified. So this can be done. Now you can give a pixel values also like this. What is this? We'll go into example. Now see, I have given like this. So I will say as 200 pixels. Okay, that's it. So the position will be moving towards 200 pixels, just like this. Now I'm changing some values like this. So मैं थोड़ा सा इसमें दिखाता हूँ. If I'm saying 300 delete 500 pixels. So I'm saving it and I'm just refreshing it. It is moving right side. I'm saying 50 pixels only, 50 pixels. Okay. So first space, how much space it will require, that is being specified. So 50 pixel space is this position is occupying. That's it. Okay. So number, if it is increasing, automatically the image spacing, that will position will be moved, that much pixels will be occupied by this property, and then the image will be downloaded or pasted over that location. So that is what is position contains. Is it clear to everybody? Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Now background attachment, fixed and scroll. Fixed and scroll. So I just copy these properties. So margin right. So attachment, I will say that fixed. So see, it has fixed its location. So this part is completed, and then after that it is being positioned. So fixed will be moving it to the position like this. Okay. Now just I refresh this. It is occupying directly the space. Now when I say attachment fixed and attachment scroll, so we'll go for fixed and another scroll. So what will happen with scroll? It's most important. So control Z. So 50.
Let us see then. Right top 200 pixel and background attachment fixed. Now fixed. Now I'm moving towards scroll. Nothing will happen with this because the image size is small. So whenever the image size is big, ध्यान में रखना, जब इमेज बहुत बड़ी हो जाती है तब आपको स्क्रॉल चाहिए होता, तो फिक्स से क्या हो जाएगा, स्क्रॉल बार कभी नहीं आएगा. When you are using this property called as a fixed, there will be no scroll bar. And whenever you are saying scroll, whenever you are saying scroll, so automatically the scroll bar will be available at the right hand side. So now the image is small, so हमें अभी ये scroll bar नहीं दिखाई दे रहा. You use this image, बिग इमेज, बड़ा वाला इमेज डाउनलोड करो और उसके साथ प्रैक्टिस करो एंड यूज दिस बैकग्राउंड अटैचमेंट एज स्क्रॉल. यू विल फाइंड इन योर आउटपुट देयर विल बी अ स्क्रॉल बार एट द राइट हैंड साइड. जितनी बड़ी इमेज हो जाएगी उतना बड़ा उसका स्क्रॉल बार आ जाएगा. सो दिस इज बेसिकली फॉर whenever you want to use the background image but whose length, width and height is very much. So two scrolls are there. One is horizontal scroll bar and vertical scroll bar. Both will be available. अगर आपकी इमेज बहुत बड़ी होगी तो दोनों स्क्रॉल बार्स अवेलेबल रहेंगे. अगर आपकी इमेज लंबाई में ज्यादा होगी तो सिर्फ राइट साइड वाला स्क्रॉल बार आपको दिखाई देगा. अगर आपकी इमेज की विड्थ ज्यादा है तो आपको बॉटम वाला, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट्स वाला स्क्रॉल बार आपको दिखाई देगा. Now my image is small, that's why it is not occupying the scroll bar. So basically attachment is used for applying your scroll bars to your what we call as a website. एंड फिक्स करने से क्या होता है, whenever there is fixed, जितनी इमेज होंगी उतनी होम पेज की जितनी साइज होगी उतनी ही दिखाई देंगी. रेस्ट पार्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड. द स्क्रॉल से आप वो इमेज को पूरा तरीके से देख नहीं सकते. सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन द बैकग्राउंड अटैचमेंट. You do this example and you'll find this in very systematic way. Now border box, padding box and content box. So these are some of the features which are available over here. And for that purpose मेरे पास image है क्या नहीं वो background वाली, but वी कैन यूज दिस इन वेरी सिस्टमेटिक वे. तो देखते हैं, मेरे पास वो इमेज नहीं है, प्रॉब्लम वही है, डाउनलोड करनी पड़ेगी. So let us see. Copy it and I'm pasting in a new file, new, paste it, and I'm saving it as an assignment for as4.html. Now see, this is border property padding. Now what we are learning here is that we want to set something. So that is a background clip. So clip, border box, padding box and content box. So this type of 4 features are there. देखते हैं कि मेरे पास वो इमेज है क्या नहीं उस तरीके की, तो तभी जाके वो आ सकता है. So let us see. So going for running this on your Chrome. Now see, border clip, I'm saying border box, that is by default. So the dots here are within that box. The dots here are within that box. Okay. Now second property is padding box. Padding box. Padding means what? Your text content, your rounded circles are at the top end or at the lateral end of your box. So this is nothing but your padding box. So you are applying the property called as a padding box. And last one is a content box. That is value is content box. This means again the padding effect is increased and you will find there is a space between your paragraph and your what you call as your images. So whatever symbol you are using over here, so that will be occupied. So border box will be by default, so it will be adding a border immediately. Padding box will be applying the border outer of your paragraph, and content box will be applying the property out of your content. Okay. So see, this is the difference between the 3 values. That is for your background clip. This has been added into CSS3, and just with the changing the value, you will find how this black dots, that is a border, is moved. Now this is nothing but we have used the dotted black. So if you want to use a dash, DASHED, ये ऑलरेडी आपके सिलेबस में नहीं है, या क्या बोलते हैं ये बॉर्डर प्रॉपर्टी, सॉरी,
dotted D-O-T-T D-A-S. So dotted ही लिखेंगे फिलहाल. Okay. So I have used this border property, 10 pixels in size and with dotted and with black color. You can change any color you want to specify. And here there is a padding of 15 pixels. 15 of pixels padding means what? जो टेक्स्ट कंटेंट हमें दिखाई दे रहा है ये पैडिंग है 15 पिक्सल ऊपर से नीचे से उसने लिया. सो दैट इज व्हाट द पैडिंग इज. एंड background color, this is light blue. We want to specify a background as light blue color. And यहाँ पर जो हमने property use की थी, that is background clip, and that is bordered box. Second one is padding box, and third one is content box. And this feature we have applied to your paragraph. This is example 1, example 2 with ID, example 3, and we have given this IDs over there. So example 1 will be specified with a background clip value as border box. Second one example with padding box, and third one with content box. So these are the three basic properties as far as background clips are concerned. You remember this because this is I will add it into CSS3. That's why it is most important for you to get knowledge about this. Is it clear to everybody? What is border box? Immediately the text content will be displayed like this. So paragraph के अंदर जैसे हमने ये सब कुछ किसमें लिखा था, दिस इज इन पैराग्राफ. सी वी हैव रिटन अ पैराग्राफ और उसके अंदर ये ड्यू है, ड्यू. वी हैव अप्लाइड दिस प्रॉपर्टी टू द ड्यू. उसके अंदर एक पैराग्राफ है, ये सेकंड ड्यू, उसके अंदर एक पैराग्राफ. सो दिस प्रॉपर्टीज आर अप्लाइड टू योर ड्यू टैग. ओके. So just like this, the output you will find that it has changed. So border box by default, it will be occupying within the div tag. Padding will be adding the value out of that div tag. And third one, content box will be adding some value, some what we call spaces between your content box and your displayed images or something like that. So you can use your image also. Here we have used the border, that is dotted border. So that's why it is looking like this. Is it clear to everybody? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now next one, background size. अभी बैकग्राउंड की साइज कितनी चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है. सो यू कैन सेट अ साइज लाइक दिस ऑटो. यू कैन सेट अ साइज लाइक लेंथ ऑल्सो, जो लेंथ आपको देनी है. ओके. एंड यू कैन यूज दिस परसेंटेज ऑल्सो, कितनी बड़ी इमेज आपको चाहिए, उसकी साइज कितनी, कवर चाहिए, कंटेंट चाहिए. सो यूज कैन बी अप्लाइड. सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस वन एंड विल add this. One second. I'm moving over here, file, new, and pasting over here. To SAS5.html. And what we do is that हम ये URL ले लेंगे. Okay. So ये URL को ही कॉपी करेंगे. ये सिंपल हो जाएगा. So here this is URL, pasting over here. This is the same URL I'm pasting over here. And let us say we'll call it as flower jpg, and this is flowers.jpg. थोड़ा सा बदल करेंगे. And we'll check it into these examples. That is background image displayed in the original size, that is a div id example 1, and second one the background image is set to 300 pixel width and 100 pixel height. So we have used this border property. अगर आपको नहीं यूज करना है मत यूज करो. बैकग्राउंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें रिपीट करना है, यानी नो रिपीट, यानी एक ही इमेज दिखाई देगी और उसकी साइज हम ऑटो बोलेंगे, यानी जो उसकी डिफॉल्ट साइज है वो आपको दिखाई देंगी. और सेकंड एग्जांपल में हमने उसकी साइज के साथ कुछ छेड़खानी की है. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. So width 300 pixel, height 100 pixel, and that should be the output we are expecting. So run, and on the Chrome we'll find it. So okay. इसी को ही तो कॉपी किया हमने.
वहाँ पे डबल बैकग्राउंड कोट में, इमेज लेना पड़ेगा, आपने सिर्फ बैकग्राउंड का नहीं नहीं एट्रीब्यूट लिए। नहीं नहीं, मैंने वो डबल कोट में नहीं लिखा था, ये मेरा थोड़ा, it should be written in double quote, then only it will be accepted. Okay, now it will be available. Okay, so we can set a width by default. We are saying that वो बॉक्स के अंदर यानी ये div के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर बोला है this div will be setting a background image like this, but there is an auto, that's mean the whole image जितनी उसकी image के size है उतना वो occupy करेगा location. Same way in another example we are changing the width and height of this image, and just you like this, it is 300 in width and 100 in height, so that is what is expected. So you can make it 500 or 700, and you can use it like this. So it will be stretching. If you want to make it 150, the height will be moving it to 150 like this. So we can change the size, that is with a background size, and we need to give the width in your x axis and y axis. So that is the thing you have to understand. As far as the background size is, that it is in CSS1, and you can say it length, you can use it in percentage also. Same example I can use in percentage, that is 50%, and I will say it as 10%. So you can use these values also, no problem. Okay, refreshing this. So see, 50% in width. See, this is the center of this page, and it is 50% been occupied and 10% in height. So we can make it 100% also, 100% in height, and we'll say as 30% in uh, is more than enough. So it should be 15%. Okay. So that will be occupied, and you will find you can set the size. You can set the size, just refreshing it. So it is just 15% of this box has been occupied. Okay. So you can change it and you can see the values also. So 50%, I will say 100%. So पूरी image वो box में दिखाई देगी. Okay. So as far as this is concerned, this is what we call as a background size. Okay. Is it clear to everybody? Now the only last property is remaining. Yes. Any doubts? Any doubts? Any question? No doubts? Okay. We'll go for last one, that is background origin. This is the last property, I think so. And this, what is this background origin? You can use the padding box. This is the value you can assign. What is called as a border box, or you can use the content box. Sorry. So you can use the content box value also. You can use the initial. You can use the inherit. So these are the values you can assign over here in this what you call as background origin. So same I will be copying over here. Let us see in this. File new, I'm pasting over here. Yes. So this is assignment 6.html. और हम यहाँ की जो images है वो उसको copy कर देते हैं. So in this URL I'm pasting over here in double quotes. This is alternate you can give. अगर नहीं मिले तो वो ले सकते. Same thing here also. I will put it over here. So अगर एक image नहीं मिलती दूसरी image भी आप उसको add कर सकते. This is either or. Same here also. And this is extra we have removed. Okay. Now it is there with us, and we have written this into what we call as a div tag. There is separate division tags, and into that we have added some text content, and we have applied this background images, and we will check it how this background image will be helping us. So I'll check it with back flower, and this is flower 1 and flower 3. It is there, it will be executed. Chrome. Now see, there are 3 images I have used over here, and what is exactly the difference between the output? You see, check it here. It is background origin content box, comma border box.
So there is what do you call as border. It is by default it is been given to your content of your, and you see this image, it is set at a center point. So there is a spacing at top, there is a spacing at bottom, there is a spacing at left. So this is called as a content box. Content box. Second one is nothing but you have used content. Your code as a border. This was the border box. So there is a border space being occupied at all the ends. Now second is content box. Now content box. Now see it is the image is moving to the border bottom level also. So the contents जितना बढ़ जाएगा उसके अंदर वो आपको border तक दिखाएंगे. So ऊपर top there is a space, left there is a space, but at the bottom side there is no space being occupied. Okay, so that is what we call as a content box. And third one, sorry, it was a border box, padding box. First one was the padding box. So padding was there from all the ends, spacing, padding was there. In second one, it was border box. So there is a border box and it has been attached over here. And third one was the content box. So you see the output like this. Now there is a scroll bar because we have used this image, and there is scroll bar will be made available for this output. So border origin, background origin will be helping us to place the content with some spacing. So whether it is a padding from the border of your text content. So it will be helping us to move your content somewhat. Spacing should be there at the end points of your images. So padding box or border box or content box will be helping us to place your image in very systematic way. Okay, and this has been added into CSS3, and that's it. This was the end of your background property. Is it clear to everybody? Yes or no? Is it clear to everybody? Yes or no? Shall we move further for an assignments now? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now we'll go for this example. No problem. We'll go for this example. Now this is the question been asked in university paper. Let us see. Okay. I'm copying this question into a new file. This is new and I'm pasting over here. I'm putting a comment for this one. So I'm saving it. I'll say as journal1.html. So this is assignments you have to complete in your journal. And I'm now putting over here the comments. So not to science. And I'm closing here with just like this. Okay. So now you help me for now this. I am copying the skeleton of HTML, and now we'll go for writing an assignments like this. Okay. So title is there, and this, title में हम लिखेंगे this is journal assignments, journal assignment. Now this should be a style sheet I have to write. So style, and I am writing it into a style / style. Okay. Now the first problem in front of you, text having Arial font size 20 and italic. Now you have to tell me the properties for giving a solution to the first one. Yes, the first one, this one. तो ये properties के लिए हमें क्या-क्या लिखना पड़ेगा? You tell me what are the set of properties. So और Arial font करना है. So what should be the property? Revise करो और मुझे बताओ which property should be there. Yes. Font family. Font family. Font family. तो मैं लिखता हूँ. It should be written in to lowercase font family. And what should be the font family? It should be Arial. So this is the first property you have to set. Second one, font size as 20. So what is that? Font size is equal to be, it should be 20 pixels. So 20 pixels. So this is the second property. And third one, italic. तो बोलो italic के लिए कौन सी property use करनी पड़ती है हमें? Yes. Yes. Yes, tell me. Italic. फॉन्ट पर प्रॉपर्टी की टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इटैलिक करने के लिए, ये वाला इटैलिक, ये वाला इटैलिक.
बोल्ड और इटैलिक ये दोनों जो करना है तो ये फॉन्ट प्रॉपर्टी में आती है कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, यू टेल मी। अंडरलाइन करना है तो किस में आता है, फॉन्ट प्रॉपर्टी है कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आता है? आई वांट टू मेक इट इटैलिक। यस, एनीवन इसको ध्यान में है क्या? सो फॉन्ट स्टाइल, इट शुड बी फॉन्ट स्टाइल कोलन इटैलिक। ओके, इज इट एवरीबॉडी, यस और नो? अगर यहाँ पर कॉमा देके उसको मैंने बोला था अंडरलाइन, तो क्या क्या होता आपने? तो फॉर अंडरलाइन व्हाट प्रॉपर्टी शुड बी सेट? टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन हाइफन नन, जो आपको अंडरलाइन करना है। सो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ओके, it should be like this. So you will see whenever it is bold or italic, it should be in your, it is in your font style property. And whenever you want to say it as underline, so it is in a text property, so that is in the text decoration value. Is it clear to everybody, yes or no? Yes or no? समझ लगा? We are writing these properties for your problem, this problem, and for that this problem you have to write this set of properties. ये हमें पढ़ना है. Now border for paragraph. So border properties are not there in syllabus. So shall I teach you the border properties? Yes or no? अगर आपको जरूरत है क्या पढ़ाने की border properties, तो हमें एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेगा आज या फिर कल. Yes. बोलो ना. यस, बॉर्डर प्रॉपर्टीज सिखाने की जरूरत है क्या आप पढ़ेंगे घर पे? यस, आई वांट अ रिप्लाई फ्रॉम यू ऑल. लेक्चर थांबू का? हो सर. नो सर. मग रिप्लाय कोणीच देत नाही. मग मी काय समजू, तुम्ही आहेत का तिथं? काय सगळ्यांनी आपला व्हिडिओ लावून चालू करून बाहेर निघून गेले फिरायला? मला नाही काहीच सर, कळत आहे. नाही. हाँ, मग मला रिप्लाय सगळं द्यायचं ना. बॉर्डर प्रॉपर्टी सिखानी है क्या? आप सीख लेंगे घर पे सब? यस. Shall I provide the content so that you can apply your logic for this border properties? हाँ सर, सर सेंड ट्राय करा. करेंगे बॉर्डर को. सेंड करा सर. मी पाठवतो. हाँ, बॉर्डर प्रॉपर्टीज यू, आई विल सेंड इट हाउ दिस प्रॉपर्टीज आर देयर. आप इसको यूज करो एंड यूज दिस बॉर्डर प्रॉपर्टी फॉर अप्लाइंग फॉर पैराग्राफ and he which should be in a blue color paragraph border. Okay, now set hyperlink without underline. Now tell me the properties. Set hyperlink without underline, यानी आपकी hyperlink को underline नहीं आना चाहिए. तो what is the property? Yes, unmute and say anyone. Yes, ये hyperlink वाली property सिर्फ anchor tag को आता है. So it should be anchor like this, and then you have to write your property over here. That is text. Now ये कब जाइए? It's text. Tell me. Text. कौन सी property? Decoration colon none. This means उसकी underline गायब हो जाएंगे. ये example हमने लिया था. And now this is specially for anchor tag. तो हमने इसको anchor specifically लिखा है यहाँ पर. Okay. Now set right margin. Now margin properties are also not there in your syllabus, तो वो भी मैं भेज देता हूँ. You set the margins also because ये properties बहुत important कि margin आप किस तरीके से दे सकते हैं. Now text color should be green. Text color should be green. So color property colon green. Now you can apply it to any tag. अगर आपको paragraph को देना है, you can put like this and you can close it like this. So ये आपको लिखना है. Now character spacing of 20 pixels. Now tell me, how to give a character spacing? Yes. Yes. Anyone who knows character spacing कैसे दी जाती है? Word spacing पता है? Now ये दोनों properties font के है कि text के है? Can anyone tell me? There is property of font or text? Yes.
बोलो विसरले पगळे सर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी की Okay. स्पेसिंग text. टेक्स्ट के With the बीच text में property, yeah, letter spacing and there is a word spacing. And now there is a question, you have to go for character spacing. Now character spacing नाम की कोई property कभी नहीं होती, ये ध्यान में रखना है. Now this is question been asked in twisted way. Character के बीच में space चाहिए, and the properties here you have to know is there, you know, that is one is letter spacing and second one is word spacing. Word spacing में हम दो वर्ड के बीच का स्पेस बढ़ाते हैं, दो वर्ड के बीच का स्पेस बढ़ाते हैं. और लेटर स्पेसिंग क्या हमने अंदर हम हर एक लेटर के बाद वाला स्पेस बढ़ाते हैं. जैसे अभी हमने एक एक सिंगल स्पेस दिया, सो ये जैसे हमने एक एक स्पेस यहाँ पर बढ़ाया, सो दैट इज लेटर स्पेसिंग. एंड वर्ड स्पेसिंग इज नथिंग बट ये स्पेस और बढ़ाते जाना, ये स्पेस बढ़ाते जाना, ये देखना, दिस इज वर्ड स्पेसिंग. एंड द क्वेश्चन हियर बीन आस्क्ड इज character spacing 20 pixel, and there is no property in a text property or in a font that is related to the character. So it is, you have to use the letter spacing. तो ये थोड़ा गूगली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान में रखना है. स्टूडेंट गो एंड डायरेक्टली राइट लाइक दिस, इट इज कैरेक्टर देन हाइफन स्पेसिंग एंड कोलन. सर ने कितना बोला था 20 पिक्सल, तो ले लो भैया 20 पिक्सल, हो गया हमारा काम खत्म. सो दिस इफ यू हैव डन, it will be asked as a wrong answer. Now here you have to put it as there are two types only, जैसे मैंने बोला है, there is only letter spacing and word spacing. So ये character होता है, इसका मतलब ये letter, this is letter spacing you have to provide, that's it. So letter spacing 20 pixel. अगर जैसे मैंने letter डाल दिया या फिर मैंने बोल दिया word, देखो ये नाम आ गया है वहां पर. ऐसे अगर मैंने character बोला होता, जैसे मैंने अभी यहाँ पर देखो, मैंने अभी word बोला, इसका मतलब word spacing नाम की प्रॉपर्टी है. अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया लेटर, स्पेसिंग की प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पर कैरेक्टर कोई ऐसी हो ही नहीं, कुछ भी नहीं है. देखो कैरेक्टर स्पेसिंग, कैरेक्टर सिर्फ चैलेंज है बस, कैरेक्टर स्पेसिंग नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं, यानी वो है ही नहीं, तो हम कैसे दे सकते हैं. तो बच्चे ये गलती कर देते whenever there is a question been asked like this, character spacing 20 pixels. Is it clear to everybody? Yes. Okay. Yes, sir. ये हमारा पहले इसका सॉल्यूशन. ओके, अभी आपको क्या करना है, ये सभी जो हमने प्रॉपर्टीज लिखे हैं, ये सबको आपको इसके अंदर, बॉडी के अंदर इंप्लीमेंट करना है. नाउ दिस आई विल नॉट टीच यू हाउ टू इंप्लीमेंट इट, दिस इज यू हैव टू डू. यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑल द प्रॉपर्टीज, ये सबका प्रॉपर्टीज का सॉल्यूशन आप ले. अभी ये मैंने प्रॉपर्टी लिखा है सबका, अभी मेरे को इसको यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज दिस वन. तो मुझे ये सब प्रॉपर्टीज में भी कॉपी करूंगा, यहाँ पर आ जाऊंगा, स्टाइल शीट में डाल दूंगा. अभी करना क्या है, इसको किसको अप्लाई करना है. नाउ यू हैव टू सेट इट वेरी सिस्टमैटिकली. सो अगर मुझे इसको पी में यूज करना है, आई विल राइट इट फॉर द पी एंड पुट अ सेमीकोलन लाइक दिस, एंड टू राइट आई विल राइट सम पैराग्राफ like this, and I will be implementing this demo for what you call as first property questions. So questions. Okay, and you can use this for this one also. So P will be applied with this all property. So Arial आ जाएंगे, font pixels 20. Now this we have implemented. एग्जाम ने जब भी कुछ थियरी पे अगर पेपर आपका हो गया, तो एग्जाम में यही चेक किया जाता है कि आपने ये प्रॉपर्टी लिखी है, यस यू हैव रिटन, यू हैव अप्लाइड टू समथिंग, दैट इज यू हैव अप्लाइड टू पी टैग, और वो पी टैग में आपने उसको यूज किया है कि नहीं. तो ये सिर्फ मैं रन करके आपको दिखाता हूँ कैसे तरीके से हमने उसकी पिक्सल साइज 20 एंड ऑल दोस थिंग्स वी हैव कवर्ड. तो इटैलिक भी कर दिया, उसको अंडरलाइन नहीं किया, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन निकाल, उसको इटैलिक किया, उसका फॉन्ट एरियल कर दिया है, और उसका साइज 20 पिक्सल करके रखा है. सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट ईच एंड एवरीथिंग. सो सेकंड वन ये आप अप्लाई करो. थर्ड वन एंकर टैग को आपको इम्प्लीमेंट करना कि उसको अंडरलाइन निकाला है. So we'll go for anchor tag, one more example over here, and I will write it into anchor tag. Href is equal to, so whatever link you want to specify, click here, and I have closed this anchor tag. Now this property of anchor tag, that is I am copying from here, and अगर मैं उसको पहले रन करके देखता हूँ कि जिस तरीके से ये आउटपुट आ जाएगा. सो सी द एंकर इज विद अंडरलाइन. नाउ ये हमें यहाँ पर बोला है कि टेक्स्ट हाइपरलिंक विदाउट अंडरलाइन.
सो मैंने ये प्रॉपर्टी को कॉपी कर दिया जो मैंने यहाँ पर लिखा था, और मैंने यहाँ पर आके मेरे स्टाइल टैग के अंदर उसको पेस्ट कर दिया. नाउ व्हेन आई रन दिस अंडरलाइन विल बी रिमूव. सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल द प्रॉपर्टीज. लॉजिक विल बी डिफरेंट. आपको किस तरीके से यूज करना है, आप इसके क्या लिखेंगे, ये हर एक का अलग अलग रहेगा, ऐसे कभी नहीं हो सकता. बट ऑल विल हैव द सेम प्रॉपर्टी. जो आप स्टाइल टैग में लिखेंगे ये सबका सेम होना, यही होता चाहिए. पर आप इंप्लीमेंट करते, कोई स्टूडेंट पी टैग को आप इंप्लीमेंट करेंगे, कोई स्टूडेंट H1 को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. चॉइस विल बी ऑफ यूजर. तो यहाँ पर सबको समझ में आता है कि आपने क्या किया है. इज इट क्लियर टू एवरीबडी कि दूध का दूध पानी का पानी. यू कैनॉट कॉपी समवन्स नॉलेज बिकॉज here it is just look and feel of your application, and look and feel हर एक का देखने का सोचने का तरीका अलग होता है और एग्जीक्यूशन का तरीका भी अलग होता है. you better keep in mind that you have to write the properties for each one, and you have to write a solution for each one, and you have to implement it into your HTML tag. And this is what is expected in your assignment list, and this is what I have sent you. Okay, so I am expecting I will be sending you 2 sets of properties. ध्यान में रखना, मैंने सिखाया नहीं, but ये syllabus में नहीं है, but you should be ready with border properties. I am highlighting with yellow color, and the margin properties. Okay, rest you will find the solution. So table के header center में लाना है, align करना है, center align करना है, bold करना है, और green color का हमें करना है. क्या देना है उसको, table के header के content को हमें green करना है. So can you tell me the solution for this one? Yes, I am copying over here and file a new and I'm pasting over here. अभी मुझे इसका सोल्यूशन बताओ. टेबल का बॉर्डर को ठीक करना है, ये प्रॉपर्टी मैंने सिखाया नहीं तो मैं ये पूछूंगा नहीं. अब टेबल का हेडर को सेंटर अलाइन करना है, बोल्ड करना है, ग्रीन कलर देना है. यानी टेल मी हाउ टू गिव दिस 3 प्रॉपर्टीज. रिवीजन. टेबल के हेडर को, टेबल का हेडर मीन्स व्हाट, टेबल हेडर. दिस इज द नेम ऑफ अ टैग. अभी उसको हमें क्या क्या करना है. See this, you have to provide a perfect solution. TH means what, table header. Okay, और उसको हमें क्या करना, align center करना. What is the property for alignment of center? Center align करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, फॉन्ट प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन करना है. नाउ दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ योर टेक्स्ट. अभी किस तरीके से अलाइन कर सकते, सी दिस, टेक्स्ट अलाइन left, right, center, and justify. So just you have to give the name of the property. So that is a text align, और इन्होंने क्या बोला था, सेंटर करना है. So CENTER, center and semicolon. That's it. So center and semicolon. Second one, bold करना है. So tell me the property for making it bold. टेक्स्ट प्रॉपर्टी के फॉन्ट प्रॉपर्टी है बोल्ड करने के लिए. यस, यस, एनीवन नोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग अ बोल्ड. Font style. font sir. फॉन्ट कौन सा, फॉन्ट कौन सा, फॉन्ट स्टाइल. Font style. नो, it is not a font style. I will show you where it is. हम अभी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, एक मिनट. हाँ, I am moving in the font property and you show you there is font color. You can give font family, you can set font size, you can set and font style, and into font style you can make it bold, italic and oblique. Okay, और हमारा क्वेश्चन क्या था, बोल्ड करना था. Okay, so we have to use this property, same font property. Okay, but ध्यान में रखना है, हम सिर्फ बोल्ड और इटैलिक ही कर सकते हैं. ध्यान में रखना, फॉन्ट प्रॉपर्टी में हम सिर्फ बोल्ड और इटैलिक कर सकते हैं, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम अंडरलाइन को निकाल सकते हैं. सेम, ये गुड आंसर. सो इट शुड बी फॉन्ट स्टाइल कोलन बोल्ड. ओके, नाउ थर्ड वन, ग्रीन कलर. सो वेरी सिंपल, कलर कोलन ग्रीन. So that is the answer, and you have to implement this. आपका लॉजिक, हर एक का अलग अलग लॉजिक रहेंगे, उसको किस तरीके से हमें यूज करना है, टेबल के अंदर हमें क्या डालना है. नाउ अल्टरनेट रोज विथ सेम कलर, अल्टरनेट रोज विथ सेम कलर, अल्टरनेट रोज विथ सेम कलर.
alternate rows with same color. नीचे अभी इधर मेरे क्या हाँ शिंदे मामा के पास भेज दो मेरे ड्रॉवर में. यस नहीं सर. Yes, alternate rows with same color. Now you can make it even and odd like this, and you can implement that also. No problem. Okay. Now I want to give assignments for you. So this will be sent to you. Use this type, that is a text indent of 10 pixels or H4 background with image and underline text. Hyperlink. ये assignments के सब solutions बना दो. And you send me the solutions so that I can check it whether how the way you have implemented. I don't want other assignments to be sent. I just want these assignments, that is CSS3 from 16 to 22 should be executed from your side. और उसको execution किस तरीके से चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर बोला है कि पहला हमारा प्रॉब्लम, हम ये सब प्रॉपर्टीज लिखेंगे, सर्च करो मैंने जितने भी नोट्स दिए उसमें वो प्रॉपर्टी का सोल्यूशन हमें मिलता है कि नहीं. जैसे यहाँ पर हमने ये जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके लिए करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज आपको ढूंढना है और उसका सॉल्यूशन आपको सीएसएस के अंदर लिखना है और उसी को आपको नीचे जाके बॉडी टैग में इंप्लीमेंट करके, हर एक का आउटपुट अलग अलग आ जाएगा. ध्यान में रखो, हर एक का सोच अलग होता है कि हमें इसको किस तरीके से यूज करना है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग that you should write a solution for all the assignments which are being provided here into this one from 16 to 22. Now इसमें कुछ properties हमने ऐड करके रखा है, जैसे मैंने बोला कि जैसे border properties मैंने सिखाया नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं था, but the theory content will be shared with you कि कहाँ से हम border properties पढ़ सकते हैं, तो वो सब text I will be sending to you. सेकेंड इज मार्जिन प्रॉपर्टी. तो कहाँ पर मैंने बहुत बार मार्जिन, राइट मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन यूज किया, तो मार्जिन प्रॉपर्टीज भी मैं आपको ये भेजूंगा. यू हैव टू लर्न इट एक्स्ट्रा बिकॉज ये पूछा जाता है इंडस्ट्री में, बट एग्जाम में ये क्वेश्चंस नहीं रहेंगे आपको बॉर्डर प्रॉपर्टीज के ऊपर. बट बॉर्डर प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बी लर्न बाय द स्टूडेंट. यस, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Shall I declare the chapter number 2 is completed from my side? Any question, any doubts, any problem you have? I am sending this assignment list immediately to you. Okay. Okay, you have to write in your journal, that is your separate 200 pages notebook. You have to complete this. You have to create output screen का screenshot निकाल के एक PDF में generate करके मुझे भेजना है. And deadline is very simple. आज है 26th. I am expecting the output should be generated and should be sent before 31st. Within this week, you have to provide a solution for all the questions. Very simple questions are there. 16 से लेकर 22 तक, यानी बहुत सिंपल है. 5-6 ऐसे क्वेश्चंस है. 6 क्वेश्चंस को मैंने 6 दिन दिया आपको. ये 6 दिन में आप कंप्लीट करके you have to submit me in a format of PDF output before 31st. Okay. I am just expecting these questions from your side. सबको समझ में आया क्या करना है? Yes or no? Yes, sir. Okay. Any doubts, any questions you want to ask from these properties we have learned, that is font property or text property or your background property? कोई questions, कोई doubts होगा? ये notes भी मैं आपको भेजने वाला हूँ immediately, and you catch everything, assignments and all 3 set of properties जो हमने पढ़ी थी वो सबको आपको खत्म करके you have to comply me before 31st. That's it. This is what is I am expecting from your side. Okay. So shall we stop for the day? Yes. Yes. Yes, sir. Okay. Okay. I will send immediately on your group. So we'll meet tomorrow with some new concept and some new chapter. Okay. Okay. Good day then. Okay, thank you, sir.